नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो पहला फर्स्ट ट्यूब में, लेक्चर में, कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो उसका कॉन्सेप्ट, वो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बट फिर भी मैं इसे एक देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे वहाँ उस प्रीवियस लेक्चर में? डिस्कस किए थे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। यस। हम लोग कम्युनिटी y मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस एंड कम्युनिटी x मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया एंड इस डायग्राम को हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन हम लोग दे दिए थे कि यस, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which represents same level of satisfaction or given level of satisfaction at different combinations of commodities like x and y. Clear? ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इसमें हम लोग ये भी बोले थे कि जैसे मान के चलिए आप कोई पॉइंट चूज करते हैं, पॉइंट A, जहां पर आप x1 of x you are consuming and y1 of y you are consuming, और यू चूज अनदर कॉम्बिनेशन से B, आप B पर चूज करें। सपोज यू आर कंज्यूमिंग x1 x2 ऑफ x एंड y2 ऑफ y, सो अगेन you are getting the same level of satisfactions but different combinations. Clear? Fine. Now next step we are moving now. So let's discuss first about the slope of indifference curve. How can you get the slope of indifference curve? So very basic understanding, basic concept we are using it to get the slope of indifference curve, because when you are knowing the indifference curve, you should know about that. As I discussed with you in previous class, कि u which is function of x and y means utility is function of x and y. X and y are two commodities. Clear? And you are knowing that कि along an indifference curve, utility remaining same, means fixed. So you just put u bar and say u is the function of x and y. So when you put u bar, bar means utility is fixed or same, given. It means along this indifference curve, the utility is remaining same. Now, let's consider you are consuming x amount of x and y amount of y. You are getting u bar level of satisfaction. We are assuming here x and y both are good goods, means if you consume 1 unit of any good like x or y, you are getting positive satisfaction or utility. तो जैसे मान के चलो कि आपने एक यूनिट x का कंजम्पशन बढ़ाया है। Clear? Let's consider you increase 1 unit of consumption of x. So due to increase in 1 unit of consumption of x, utility will change. Utility will change, and it is known as, and or you can write it like this, you can write it like MUX. Here I'm telling you what is MUX. So in the previous lecture I discussed with you, if you consume one additional unit of any commodity x or y, then how much additional satisfaction or utility you are getting due to one additional unit of consumption, that is known as marginal utility of x or marginal utility of y, depending on consumption of x or y. So let's consider if you increase 1 unit of x, suppose you increased or changed, so MUX amount utility has changed. But it is not necessary always कि we only change 1 unit of x, may possible you change say more than 1 unit of x. Let's consider dx amount of x you changed. Dx may be 10 units, maybe 20 units, like this.
So what you are getting this? MUX represents change in utility due to change in 1 unit of x. DX represents total change in amount of x. So MUX into DX represents the change in total utility due to change in total amount of x. Similarly, you can write for y also. So you can write MUY dy, same concept. When you say MUI, MUI represents marginal utility of y, which simply means that if you consume one additional unit of y, how much change in total utility, that is represented by MUY, means marginal utility of y. Dy represents total change in y, maybe 10 units, maybe 20 units. So MUY into dy, this part represents change in total utility due to change in total amount of y. Clear? Now just check here. It is a total amount. This part represents total amount. This part represents total amount change, change in total utility due to total change in x. And this part represents total change in utility due to total change in amount of y. Now take this example. Take one example. Suppose you increase the consumption of x from OX1 to OX2, mean this much amount of x you have increased. So definitely this much utility is going to increase. But to remain on the same IC curve, means at the same level of satisfaction, you have to cut down the y consumption of y. So you are decreasing the consumption of y. So if you are decreasing the consumption of y, so this much utility is going to decrease. So it means if this much utility is going to increase and this much utility is going to decrease, why? Because here you are increasing the consumption of x, that we are assuming. And here you are just assuming that, say, dy amount of y, you are decreasing the consumption of x. But the change in the total utility, if you add it, this plus this, so change in total utility will be remain 0. Remain 0. Because as you take the total derivative, u is the u bar, it's constant. To du bar must be equal to 0. That is, the derivative of any constant is 0. So here change in total utility will be 0, and that is the concept you are getting from the indifference curve. If you move from A to B or B to A, the total utility will remain same, means change amount will be 0. Now from here you can write like this: MUY dy equal to minus MUX dx. You rearrange it. Dy upon dx, which is equal to minus MUX upon MUI. See, clear? You can just simplify this, and here if you take this, it's a diagram, it's a curve. So dy dx represents slope of this curve, dy dx, and you are knowing that dy dx, you can also write delta y upon delta x. You can write it like this. So it's a dy dx is nothing but it represents the slope of this curve, and this curve is nothing but it's a indifference curve. So, and what is the slope? Then slope is equal to minus MUX upon MUY. So finally from this you can write it, you can write it, the slope of indifference curve, which you can written here, dy upon dx, which is equal to minus MUX upon MUY. Or you don't need to write it, just you write directly, slope of indifference curve is equal to minus MUX upon MUY. And you are knowing that MUX is greater than 0 and MUY is also greater than 0. It means when you start consuming more, okay, so initially after consumption of additional unit of x or y will always give you positive level of satisfaction, means additional amount will be always in positive. Your
marginal utility keeps increasing initially. So if MUX is positive, MUY is positive, so whole term, if you just see, due to this minus sign, is negative. So you can just see that the slope of indifference curve is negative. Clear? So always remember, slope of indifference curve is equal to minus MUX upon MUY, which is negative. And you have seen the diagram. Yes, it is negative. Clear, dear? Fine. Now, after this slope concept, if you measure along x-axis community X and community Y along y-axis, if you take more than one indifference curve like this, see, it's you can say IC1, you can say IC2, you can say IC3. Okay, so if here as per this diagram, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि IC3 represents higher level of satisfaction compared to IC2 and IC2 represents higher level of satisfaction compared to IC1. यानी कि IC3 जो है आपको higher level of satisfaction represent कर रहा है in compared to IC2 and IC2 indifference का वो higher level of satisfaction represent कर रहा है in compared to IC1. So if you move rightward means away from the origin like this, so utility or satisfaction of every next indifference curve will be higher one. But if you move towards origin leftward, then every next indifference curve will give you relatively low level of satisfaction. Simple concept. If you compare a point is at point A and compare a point is on IC2B, definitely in compared to A, B having more of X and Y. So any commodity bundle having more of X and Y, definitely that commodity bundle will be preferred in compared to point A if you are assuming X and Y are the normal goods or positive goods, good goods. So in this way you can say, but if there is a more than one indifference curves, it is known as indifference map. Yeah, it is known as indifference map. Clear here? Okay, fine. Now अब आइए, अब इसके बाद इंडिफरेंस कर्व क्या है, स्लोप क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व्स और इंडिफरेंस कर्व. क्लियर? सो क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो आप पहला प्रॉपर्टी आपका इंडिफरेंस कर्व का होता है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स cannot intersect each other. देखिए क्या समझे? पहला प्रॉपर्टी आपका कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में टच नहीं कर सकते हैं या आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? फिर से सुन लीजिए, एक प्रॉपर्टी है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे चाहे एग्जाम में या कहीं पर, ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि दो इंडिफरेंस कर्व को कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कराना है और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कराना है. अगर आप करा देते हैं डायग्राम में तो वहीं पर आपका पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा. सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पूरे कंज्यूमर बिहेवियर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दो ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कर रहे हैं. एक है हमारा इंडिफरेंस कर्व, दूसरा है बजट लाइन. अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडिफरेंस कर्व का तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे. तो ये सिर्फ जानना जरूरी है कि जब प्रॉपर्टीज़ को और उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही आप हमेशा ड्रॉ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता या टच नहीं कर सकते. यू रिमेंबर डियर? ओके, सो नाउ हाउ कैन यू प्रूव इट? यू हैव टू प्रूव इट. ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट मेकिंग ए स्टेटमेंट इट इज नॉट एनफ फॉर अस. सिर्फ स्टेटमेंट देना मेरे लिए जरूरी नहीं है. जरूरी है कि जो हम बोल रहे हैं उसको प्रूफ करना. एंड नॉर्मली वी प्रूव बाय यूजिंग द डायग्राम. So everywhere when you're writing anywhere, please try to mention the diagram, and through diagram you should explain it. Like I'm going to explain you the two indifference curve cannot intersect each other. कैसे करेंगे आप देखिए. So just measure commodity or just write goods, I think. Yeah. Goods Y. Goods X you are measuring along the horizontal axis and Y along the vertical axis. Okay. Now, for proving these things, we have to assume, we are going to assume, okay, let's consider कि टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर. यानी कि हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. मान लीजिए यहां पर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए, सो एक हम IC1 ले लेते हैं, दूसरे को हम ऐसे ले लेते हैं से IC2. देखिए, चलिए हम लोग ले लेते हैं दो इंडिफरेंस कर्व लिए हैं, एक IC1 लिए हैं, दूसरा IC2 लिए हैं. क्लियर? एंड मान ले रहे हैं कि दोनों इंडिफरेंस कर्व जो है, लेट अस कंसीडर बोथ इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए. हम मान लेते हैं कि दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है. एक पॉइंट हम IC2 पर लेते हैं जिसे हम लोग पॉइंट बी बोलते हैं, और ठीक इसके वर्टिकल डिस्टेंस में एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग पॉइंट सी बोल रहे हैं. देखिए, सी पॉइंट कहां पर है? IC1 पर है. बी पॉइंट कहां है? IC2 पर है. और IC1 IC2 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर. क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉइंट सी इज ऑन IC1, पॉइंट बी इज ऑन IC2, एंड बोथ indifference curves intersected at point A. Let's consider. Clear? Now, from this diagram, you just check here. Let's consider, I'm just considering IC1 or at IC1. At IC1. So when you take IC1 and you take point A and C, IC1 at A and C. So A and C both are on the same indifference curve IC1. फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा कि पॉइंट ए और सी दोनों IC1 के ऊपर है, दोनों IC1 के ऊपर है. और हम लोग अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट क्या देखें इंडिफरेंस कर्व का, कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि हर एक पॉइंट एक दूसरे का इंडिफरेंट होता है. ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. तो देखिए, पॉइंट ए एंड बी सी, ये चूंकि दोनों IC1 के ऊपर है, तो जो यूटिलिटी हमें पॉइंट ए पर मिल रहा है और जो यूटिलिटी पॉइंट सी पर मिल रहा है, दोनों सेम है. सो कैन वी से कि पॉइंट ए इज इंडिफरेंट टू पॉइंट सी. I stands for indifferent, that already I discussed in the previous lecture. I जो है वो indifferent represent कर रहा है, and P किससे represent कर रहा है? Preferred. तो यहाँ A is indifferent to C, or you can write C is indifferent to A, no issue. क्लियर है? अब देखिए दूसरे इंडिफरेंस का एट IC2 लीजिए. जब IC2 पर देखेंगे आप देखिए गौर से, तो अब यहां पर क्या है? पॉइंट ए एंड बी दोनों सेम इंडिफरेंस का IC2 पर हो गया है. दोनों ए एंड बी दोनों जो है इंडिफरेंस का IC2 पर है. यानी कि ए से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बी से जो मिल रहा है, दोनों सेम मिलेगा. इसका माने फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन जस्ट राइट इट कि यस ए इज इंडिफरेंट टू बी. क्लियर?
हम प्रीवियस लेक्चर में एक बताए थे आपका लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, शायद याद होगा। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी बताए थे। क्या बोले थे आपको याद है कि अगर 3 बंडल लेते हैं ए बी एंड सी, तो ए अगर इंडिफरेंट है बी से और बी है इंडिफरेंट सी से, तो ए भी होगा इंडिफरेंट सी का। याद है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी? या अगर आप ऐसे लेते हैं कि A is preferred to B, B is preferred to C, then A must be preferred to C, that we discussed in the previous lecture. याद आ रहा है आपको? अब देखिए, इसी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी के आधार पर आप इसको कंक्लूड कीजिए। तो जब आप बोल रहे हैं कि A और C आपस में इंडिफरेंट है, A एंड B आपस में इंडिफरेंट, तो ऑब्वियस है कि फ्रॉम यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि B जो हुआ वो इंडिफरेंट हुआ सी का। जब ए सी से इंडिफरेंट है और ए बी से भी इंडिफरेंट है, तो ऑब्वियस है बी इज इंडिफरेंट टू सी फ्रॉम दिस लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। एंड लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी है क्या? ये एक्सियम्स है, ये एजम्पशन है, ये 100% परफेक्ट है, हम मान के चल रहे हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स 100% परफेक्ट, आई मीन राइट। इट्स एक्सियम्स, एजम्पशंस, सो ये तो वैलिड है। बट अब देखिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे, ओके, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को जब आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए आप कुछ देख रहे हैं। आप जब आप कंपेयर कर रहे हैं बी एंड सी में, तो बी एंड सी दोनों पॉइंट पर एक्स का अमाउंट सेम अमाउंट है, यानी कि एक्स अमाउंट जितना सी में है उतना ही एक्स अमाउंट कम्युनिटी आई मीन बंडल बी में है। तो बी एंड सी में एक्स का अमाउंट सेम रह गया। बट आप गौर से देखेंगे तो बी में वाई का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। बी में वाई का अमाउंट क्या हुआ? ज्यादा हो गया। एंड प्रीवियस क्लास में हम एक चीज और बताए थे, एम आई बी। एम आई बी होता है, एम आई बी मोर इज बेटर। और ये कब होता है? जब जो गुड्स हम कंसिडर करते हैं इट्स गुड गुड्स, तो गुड गुड्स के केस में मोर इज बेटर। तो कोई भी कम्युनिटी बंडल हो, अगर जिस कम्युनिटी बंडल में अगर गुड्स यानी क्वांटिटी की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है उसमें, सो एक रैशनल कंज्यूमर उसको हमेशा प्रीफर्ड करेंगे। और यही चीज यहां पर आपको मिलेगा कि चूंकि बी एंड सी दोनों में कंपेयर करेंगे तो एक्स की क्वांटिटी सेम है बट बी में वाई ज्यादा है, इसलिए फ्रॉम दिस विजुअल इंस्पेक्शन यू कैन से दैट कि बी इज प्रीफर्ड टू सी। प्रीफर्ड हो गया, बी इज प्रीफर्ड टू सी। एंड यही दोनों जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, ये रिजल्ट एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट है। दिस वी कैन से इट्स ए कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट। कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट। ओके, ये कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट आ गया। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ओनली वन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज्ड। रीजन इज व्हाट? द रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व। बिकॉज यू कैन नॉट से एट द सेम टाइम कि B is indifferent to C and you cannot say same time B is preferred to C. Okay, B is indifferent to C and B is preferred to C. You cannot say both at the same time. Either it is right, then it is wrong. If it is right, then it is wrong. But from one way you are saying it's B is indifferent to C, and from visual inspection you are saying B is preferred to C. So contradictory result you are getting, and then you can conclude it that this contradiction has arisen due to the intersection of two indifference curve. So on the basis of that you can say that two indifference curve cannot intersect each other. Okay dear? So this is the first property. Let's just stop this lecture here and we can continue. Thank you dear. Thank you.